अस्सलाम वालेकुम। तो इसी कोर्स में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, जो फिजियोलॉजिकल प्लांट पैथोलॉजी का कोर्स है, इसमें हमारी नेक्स्ट वीडियो है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कैसे इफेक्ट करते हैं प्लांट पैथोजेंस जो है। फोटोसिंथेसिस जो है दैट इज नोन एज द मोस्ट वाइटल process of the plants or function of the plants because in this function the plants make the food on earth. तो प्लांट्स जो है क्योंकि ये प्रोड्यूसर हैं तो जितनी भी फूड चेन्स हैं वो पौधों से ही स्टार्ट होती हैं या ग्रीन एल्गी से या सियाना बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनसे ही स्टार्ट होती है। तो ये कह लें कि जो ज़मीन के ऊपर है या अर्थ के ऊपर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सारी की सारी फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो है वो प्रोड्यूस होती है। So that is why the photosynthesis is called the most vital function of the plants. तो रोल क्या फोटोसिंथेसिस का प्लांट्स के अंदर? फोटोसिंथेसिस enable green plants to transform light energy into chemical energy in the form of glucose that is used for the cellular activities. Nearly all the energy used by living organisms or living cells be in the plants or animals ultimately originates from the photosynthesis. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सारी की सारी जो फूड चेन्स या वो फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट होती हैं या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती हैं, तो एनर्जी यहाँ से ओरिजिनेट होती है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है that uses the carbon dioxide and water from the atmosphere to form the glucose in the presence of light and chlorophyll. This process takes place in the chloroplast. तो ये आप देख रहे हैं जो इक्वेशन है which was developed by the Helmont in 1648. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है in the presence of chlorophyll and sunlight they develop the glucose and oxygen in the chloroplast. So when Helmont was working on the willow plants, यहाँ पे आप देख रहे हैं when Helmont partially discovered the process of photosynthesis, उसने जो है वो वे किए विलो प्लांट और उनको सॉइल को भी वे किया, उस सॉइल का भी वजन किया और पौधे का भी वजन किया और उसने 5 साल में उस पौधे को ग्रो किया तो वो 5 किलो से लेकर जो है पौधे का वजन जो है वो 74 किलो जो है वो हो गया था। तो ये डिफरेंट था फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट जो है बहुत बड़ा हो गया था 5 सालों के अंदर। एज द वेट ऑफ द सॉइल हार्डली चेंज, क्योंकि सॉइल का जो वेट चेंज नहीं हुआ था, तो व्हेन हेलमॉन्ट कंक्लूडेड दैट प्लांट ग्रोन कैन नॉट ओनली बी ड्यू टू मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, जो कि पहले जो ग्रीक एंशिएंट ग्रीक्स जो है वो इसी तरह उनकी थ्योरी थी कि पौधे जो है बड़े होते हैं तो वो एक्चुअली सॉइल से बहुत सारे मिनरल्स जो है वो लेते हैं। तो ये मिनरल के अलावा मतलब कहीं और से सारी एनर्जी आ रही थी जो कि डिपॉजिट हो रही थी पौधे के अंदर। So then he thought that the extra plant material had come from the water alone. उसके बाद जो है प्रीस्टली जो है इसने एक्सपेरिमेंट किया that showed that plants produce oxygen. तो ये मिंट के जो पुदीना का प्लांट है उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट उसने किया था, जो उसने पानी में रखा, पानी में से जो है वो बबल्स जो निकल रहे थे, बुलबुले जो है, तो उसने ये नोट किया कि कोई गैस जो है वो निकल रही है मिंट के प्लांट से। then afterward he reported that this was oxygen. इसी तरह हाइगनहाउस जो है he was a Dutch scientist and he also worked on the photosynthesis and he said that the oxygen and carbon dioxide are released by the plants. He also realized that more oxygen is given off in the light. जब रोशनी होती है ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं पौधे, लेकिन जब डार्क होता है अंधेरा होता है तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो वो देते हैं।
तो ये भी एक अच्छा लैंडमार्क था इस रिसर्च के अंदर। ये आप कह लें कि एक हिस्ट्री है फोटोसिंथेसिस की, वो कैसे डिस्कवर हुई। तो ये थोड़ा सा देखें कि क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स जो है वो होते हैं इस ये पिगमेंट्स हैं जो कि दे आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड्स मेम्ब्रेन्स जो हैं इनके अंदर जो है वो आप कह रहे हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन that is undergonic redox in which oxygen plus reduction takes place together. The process took place in the thylakoid membranes in chloroplast, and the whole process occurs in 2 stages. One is called the light reaction, that is also called the light reaction, and the other one is dark reaction, that is also called Calvin cycle. In light reaction, light is converted into the chemical energy. Water and carbon dioxide react in the presence of sunlight and make carbohydrates and like glucose and release oxygen. The light is used to generate electrons with reducing potential by the chlorophyll. तो photons की शक्ल में जो light में electrons जो है मौजूद होते हैं, जो photons होते हैं, photons जो है they generate the electrons, and from these electrons ATP and NADPH are produced. So this occurs in thylakoids of the chloroplast. इसी तरह जो Calvin cycle है, carbon dioxide from air is incorporated to organic molecules in a process called carbon fixation. तो यहाँ पे carbon fixation होती है। वो कैसे होती है? The process uses ATPase, adenine triphosphates, इनमें एनर्जी जो है मौजूद होती है, and NADPH molecules to make sugar from the carbon dioxide. So ये वाला जो है ये स्ट्रोमा में होता है। यहाँ पे आप देखें कि ये जो है ये स्ट्रोमा है जो कि फ्लूइड होता है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये जो कैलन साइकिल है ये स्ट्रोमा में वकूअ पजीर होता है। It again give back the ADP inorganic phosphate and NADP plus to the light reaction. तो यहाँ से ये लाइट रिएक्शन की तरफ आता है, यहाँ से फिर NADPH बनता है और ATP बनती है, और ये ऐसे साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो कैसे पैथोजेंस जो है वो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं? तो ये आपको पता है फोटोसिंथेसिस जो है फंडामेंटल प्रोसेस है through which green plants convert light energy into chemical energy, and this energy enable the plants to sustain all cellular activities, and it also serves as the primary source of energy for both plants and animals, and this is the very crucial life sustaining mechanism. The impact of pathogens on photosynthesis, तो इसमें जो है वो कैसे इंटरफेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो पैथोजेंस हैं या जो डिजीजेज हैं। तो पैथोजन काज क्लोरोसिस, येलोइंग, दैट इज एक्चुअली द डेथ ऑफ क्लोरोफिल। तो अब क्लोरोफिल जो है वो अगर उसकी डेथ हो जाएगी या डिग्रेड हो जाएगी तो इसकी वजह से सरफेस एरिया जो है कम हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का। इसी तरह नेक्रोटिक लेजेंस जो है, नेक्रोसिस के अंदर जो सेल डेथ हो जाती है, तो अगर सेल डेड हो जाएगा तो उसके अंदर जितनी क्लोरोप्लास्ट है या जितनी क्लोरोफिल है वो यूजलेस हो जाएगी, वो डिग्रेड हो जाएगी। तो अगर ये दो प्रोसेस हो रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो दे लीड टू रिड्यूस्ड ग्रोथ एंड डिक्रीज्ड फ्रूट एंड ग्रेन प्रोडक्शन। इसी तरह नीचे अगर फॉर एग्जांपल पानी नहीं आ रहा जाइलम से, तरसील नहीं हो रही या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नहीं हो रही, तो पानी पौधों के पत्तों तक या ग्रीन पार्ट्स तक पहुंच ही नहीं रहा वहाँ पे, या कम मिकदार में पहुंच रहा है, तो उसकी वजह से भी फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो मुतासर होता है। लीफ डिजीजेज हैं, जिस तरह लीफ स्पॉट्स हैं, ब्लाइट्स हैं, और इसी तरह के और डिजीजेज हैं। दीज कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ लीफ टिश्यू, reducing the photosynthesis area
or photosynthetic surface of the plants. Late stages of disease can affect chloroplasts and cause their degradation or degeneration, leading to reduced photosynthesis. Nearly complete destruction of pumpkin leaves infected heavily with the downy mildew, mycetes, pseudopodospora cubensis. यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये downy mildew of cucurbits that is caused by the pseudopodospora cubensis. तो यहाँ पे बहुत सी क्लोरोसिस जो है वो आपको नजर आ रही है, जो येलो प्लेसेस जो है वो आपको नजर आ रही हैं. तो इन यहाँ पे जो है क्लोरोसिस हो गई है, क्लोरोफिल की डेथ हो गई है. इस तरह लीव स्पॉट ऑन barley leaves caused by the fungus. A reduction of chlorophyll content. Many fungal and bacterial diseases decrease the overall chlorophyll content in leaves, thereby affecting photosynthesis. Although the remaining chlorophyll may retain some photosynthetic activity, but that is not enough for the plant, and that leads to poor growth of the plants. तो यहाँ पे phytoplasma है जिस तरह that infects the apple plants. Mung bean yellow mosaic virus यहाँ पे आपको नजर आ रही है. So, in addition to chlorosis and necrosis, the plant pathogens also release toxins and enzymes, different toxins which lead to the enzyme inhibition. For example, some pathogens release toxins such as TEN toxins and TAP toxins. These inhibit enzymes involved in the photosynthesis. For example, rubisco जो है बहुत important enzyme है, तो maybe these toxins bind to the active sites of those enzymes and they cannot work properly. Like Alternaria alternata produces TEN toxin that causes chlorosis and leaf spots in many plants. इसी तरह स्टोमेटा के ऊपर जो है वो इफेक्ट होता है और वेस्कुलर जो बंडल्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट होता है. Vascular pathogens cause partial stomatal closure due to you can say wilting and loss of turgor. इसी तरह viruses, molecules, and nematode diseases often leads to chlorosis, stunting, and significantly reduced photosynthesis. फ्यूजारियम जो है ये येलोइंग और क्लोरोसिस काज करती है, क्योंकि फ्यूजारियम विल्ट जो है इसमें जो है वो जाइलम अपना काम करना खत्म कर देती है और क्लॉग हो जाती है जो जाइलम वेसल है, जिसकी वजह से पानी ऊपर लीव्स तक नहीं पहुंच पाता और फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो येलोइंग स्टार्ट हो जाती है और फोटोसिंथेसिस का अमल जो मुतासिर होता है. तो यहाँ पे और है फॉर एग्जांपल जो मोंगवीन येलो मोज़ाइक वायरस है मोंगवीन, तो यहाँ पे ये अर्ली स्टेज आप देख रहे हैं, तो ये लेट स्टेज है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज जो है वो 1/4 रह जाती है, तो जिसकी वजह से ग्रोथ जो है ओवरऑल बहुत ही इफेक्ट होती है. तो इफ वी कंक्लूड दिस lesson or this lecture, photosynthesis stands as the cornerstone of plant life. Not plant life, but all the life, most of the life on the earth. Allowing green plants to harness light energy into the chemical energy to sustain vital cellular activities. However, the intrusion of the plant pathogen can disrupt or disturb this essential process, leading to various diseases that negatively impact the plant health. This is why understanding the relationship between photosynthesis and plant pathogens can help in developing effective strategies for disease management and promoting healthier plant growth and crop production. So thank you very much. I hope you like this video. Assalamu alaikum.